Yes, let us start with the remaining MCQs from this chapter, that is magnetism. Okay, we have already done some MCQs last time. So, yes, you can just see the screen. Okay, so let us consider this question. Yes, ये हम orally solve कर सकते हैं. देखो, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ओरल सॉल्व किया जा सकता है. B mu naught H mz have their usual meanings. Then what is the correct equation? We can just know that B is equal to mu naught into H plus mz. This D is actually going to be the correct option here. After putting this mz as chi into H, we can just take this H also common out, and then we can just be able to get this as B is equal to mu naught H into 1 plus chi, okay, which is the standard derivation only. And even ये जो second question है, the angular momentum of electron is J bar, and the magnitude of magnetic moment will be given by. So magnetic moment is given by E by 2m into J. ठीक है, that is the angular momentum. तो यहाँ पे ये भी बताया था कि E by 2m ये जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, gyrometric ratio बोलते हैं. तो gyrometric ratio multiplied by angular momentum gives us the magnetic moment. और ये भी हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो angular momentum है तो वो तो चलो mechanical quantity है, so it's positive, but magnetic moment is always going to be in the opposite direction to that of the magnetic angular momentum, and that's why there will be a minus sign if it is expressed in terms of vectors, remember. And again, this fourth one also be solved orally. Magnetic susceptibility is the constant of proportionality between the magnetization and H, right? So magnetization और H के बीच में जो constant of proportionality होता है उसको ही हम chi मतलब magnetic susceptibility बोलते हैं. So we can just call it as mz upon H as the chi. All these are the theoretical questions actually. You can just yes, unit of gyrometric ratio, as we just have seen, at E by 2m is called as the gyrometric ratio, right? So E का unit है charge, मतलब coulomb, और m मतलब mass, तो उसका unit होगा kilogram. So coulomb per kilogram, which is already there in the option C here. Yes. Let us take this 12th one. A circular coil of radius 10 and 100 turns carries current 1. What is the magnetic moment of the coil? You can just solve it. 14th वाला देखो, a magnet of magnetic moment 3 weighs 75. Yes, we can just take this on your board. Okay, just read this question carefully. A magnet of magnetic moment 3 ampere meter square weighs 75 gram, and the density of the material of the magnet is given to be 7,500 kilogram per meter cube. What is the magnetization? Okay, as we know already that this magnetization is actually defined as the net magnetic moment upon volume, correct है? तो ये हमको फॉर्मूला मिलता है जिसमें अभी वॉल्यूम तो डायरेक्ट दिया नहीं है, but we can find out the volume by using the mass density relationship. तो volume is defined as mass upon volume, correct है? तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा mass which is given to be 75 gram, but remember to convert it into kilogram. So 75 gram means it will be 75 into 10 raised to minus 3 kilogram, which will be divided by this, sorry, density, sorry,
volume will actually be equal to mass upon density here. So the density is already given in standard units, so no need to change any units. 7,500 kilogram per meter cube, so that we can just get this 75 cancelled, leaving behind 100 in the denominator, so that this 100 will just go in the numerator and becomes 10 raised to minus 2, so that it will become 10 raised to minus 5. Okay, this is actually going to be the volume in meter cube. Yes, and that is to be put here in the denominator. So अगर यहाँ पे हमने वॉल्यूम डाल दिया तो ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर करके, और वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो इसलिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 into 10 raised to 5, which is actually going to be the magnetization, and obviously it will be in ampere per meter, which is the standard unit of magnetization. So it will be B here as the correct option. Okay, let us go to the next question. Let's just take this question number 19 here. Yes, just read it carefully. A bar magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field. If the couple acting on the magnet is halved by rotating it, then the angle by which it is to be rotated is. Okay, so see here, there is a magnetic field which is supposed directed in some direction like this here. And also there is a magnet which is kept perpendicular to this magnetic field. Okay, ये magnetic field है, और इस magnetic field के अंदर एक magnet जो है वो perpendicular direction में उसको रखा हुआ है. ठीक है, so let us take this magnet. Just kept perpendicular to this magnetic field here. Yes, ये हो गया magnet जो कि इसको perpendicular रखा हुआ है. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, देखो इसके ऊपर कपल कितना एक्ट होगा. When it is perpendicular, the couple acting on it will be given by the formula tau is equal to m into b, because sin theta is 1. Theta is 90, so sin theta will be 1, and hence the couple will be maximum. Okay, but now we want to make this couple half of the original by rotating this magnet. Okay, तो कितने एंगल से हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि उसका कपल जो है वो हम आधा कर पाए. अभी देखो, अगर ये मैग्नेट जो है उसको अगर हम सपोज रोटेट करते हैं, तो अगर ऐसा रख देते हैं, if suppose this magnet is just kept like this so that its axis is making some angle theta with the direction of magnetic field. Suppose ये axis है मैग्नेट का और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, थीटा इतना एंगल कर रहा है. सपोज ये एंगल जो बना हुआ है वो अगर हम मान लेते हैं थीटा है, तो ऐसे केस में हमको ये पता है कि टॉर्क जो है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट बिकम्स एक्चुअली एम बी इंटू साइन थीटा एक्चुअली. करेक्ट है. सो इफ यू जस्ट हैव दिस टॉर्क डैश and this is torque, then according to the given, the torque after rotation is going to be half of the as it of the torque before rotating it, right? That means this torque dash is expected to be half of torque here. Okay, that means mb sin theta has to be equal to 1/2 times of mb only, so that here mb gets cancelled, and what we are left with is sin theta is equal to 1/2, and hence theta becomes actually 30 degree, right है. तो ये तो हमको मिल गया, but this theta is the angle made by this final position of the torque with the magnetic field actually. But what we have to find out is the angle by which the
मैग्नेट इज टू बी रोटेटेड, देखो तो हमको निकालना क्या है, एंगल थ्रू विच द मैग्नेट इज रोटेटेड। तो अभी मैग्नेट कितने एंगल से हमने रोटेट किया, जबकि वो पहले परपेंडिकुलर था। तो उस केस में जितने एंगल से वो रोटेट किया जाएगा, वो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 90 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। तो 90 minus theta will actually be the angle through which this magnet has to be rotated here. So therefore, required angle we can say will actually be 90 minus theta here. So if we just subtract this 30 from 90, then we can be able to get this as a 60 as a final answer, which is going to be there in the option C here. Okay. Let us see the next question. Yes. What is Curie's law? Chi is inversely proportional to T for paramagnetic substance. But this is also true for uh, ferromagnetic substance, but that is not actually the Curie's law, but the तो Curie's law के बारे में अगर पूछा है तो this C will be the correct option here. Okay, so let us see. Let us take this question number 18 here. Yes, the barometric ratio of electron revolving in circular orbit of hydrogen atom is given to be 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kilogram. Okay, what is the mass of electron given that the charge on electron is, so barometric ratio मतलब E/2m होता है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 8.8 into 10 raised to 10. सो चार्ज भी दिया हुआ है, तो मास निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो निकाल सकते हैं आराम से। 1.6 into 10 raised to minus 19 upon 2m will actually be equal to 8.8 into 10 raised to 10, so that 2m will actually be, और 2 को रखो वैसे ही, m को सिर्फ लेके जाओ उधर, तो 1.6 into 10 raised to minus 19 upon 2 times of 8.8 into 10 raised to 10, that is going to be m. So mass of electron, अब ये 10 raised to 10 जो है वो ऊपर जाके 10 raised to minus 19 के साथ कंबाइन होके 10 raised to minus 29 बन जाएगा, right? Yes, so here it is 10 raised to minus 29, but here it will be 1.6 upon 2 times of 8.8. That means we can just cancel out this 2 with 1.6, 0.8 leaving behind there. So you get this 0.8 upon 8.8, which can also be written as 8 upon 88. So that we can just reduce this by 8 and be left with 1 upon 11 here. So 1 upon 11 stands for, yes, 1 upon 11 means 0.0101, and that will be into 10 raised to minus 29 here, which can also be written as 0.1 into 10 raised to minus 30 actually. Okay, we have left the 2 options behind. Yes, already रेडीमेड ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमको जो मिला हुआ है 1 upon 11 into 10 raised to minus 29, which should be the correct option, which is already there in option D here. Okay.
So D will be the correct option, no doubt. Yes, let us check this. Question number 19 here. Yes, a charge Q is circulating with a constant speed V in a semicircular loop of wire of radius R. Then the magnetic moment of this loop is, okay, semicircular loop of wire R. That means the loop is semicircular like this. Okay. Constant speed V के साथ ये लूप यहाँ पे मूव कर रहा है. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं पूरे लूप की वजह से जो करंट पैदा, जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है उसको हम आधा कर देंगे एक्चुअली. तो ठीक है, तो चार्ज जो है, वी कैन जस्ट फाइंड आउट द करंट हियर. करंट विल एक्चुअली बी चार्ज अपॉन सेमी सर्कुलर लूप. ओके, मतलब यहाँ पे भी ऐसा है, ये भी कनेक्टेड है ऐसा. सो चार्ज जस्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे इस तरह से वो मूव करता है, इस तरह से मूव करता है और यहाँ पे वापस आ जाता है. ओके, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा इस लूप का, वो हमको ढूंढ के निकालना है. ठीक है, सो ओके. ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. Let's see this 22nd one. Yes, a bar magnet of length 10 centimeter and having the pole strength equal to 10 raised to 3 Weber is kept in a magnetic field having the magnetic induction B, which is equal to 4 pi into 10 raised to minus 3 Tesla. It makes an angle 30 degree with the direction of magnetic induction. Okay, the value of torque acting on the magnet is, yes. So देखो, एक magnet है, the same situation once again. There is a magnetic field. Suppose this is the magnetic field, and a bar magnet is just kept in this magnetic field here. So this is suppose the magnetic field,
Okay, and the bar magnet is already kept in this magnetic field, and magnet का length जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, length of the magnet is given to be, so that will be actually 12, right? Length of the magnet is given by 12, which is going to be 10 centimeter here. Okay, and having the pole strength is also given to be 10 raised to 3 here. Unit तो correct नहीं है उसका, but चलो ठीक है, standard unit some consider करके, और magnetic induction भी दिया हुआ है B, which is going to be equal to 4 pi into 10 raised to minus 3 Tesla. Okay, and it makes an angle of 30 degree, so angle भी दिया हुआ है 30 degree. Yes, and the direction of value of torque we have to find out. So torque is actually equal to mb sin theta, right? But here theta is given to be 30 degree and m is not given, so m can be found out separately. तो m कितना बनेगा, m into 12 के बराबर, तो यहाँ पे m और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m is going to be 10 raised to 3 and 12 is going to be 10 centimeter, so it will be 10 into 10 raised to minus 2 मीटर, मतलब 10 raised to minus 1 मीटर हो गया वो, जिसको हम सिंपली 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. And if we just put it here, then we can be able to get this 100 into b का वैल्यू जो कि 4 pi into 10 raised to minus 3 है, और sin 30 जो कि हाफ बनता है, जिसके कारण यहाँ पे ये 2 pi into 10 raised to minus 3 बन जाएगा, तो जिसको हम लिख सकेंगे, तो देखो 4 pi into 10 raised to minus 3 into 10 raised to 2 becomes 10 raised to minus 1 here, and half, which makes it 2 pi into 10 raised to minus 1. So 2 pi into 10 raised to minus 1 Newton per meter. टॉर्क के लिए तो म्यू नॉट लगता ही नहीं है, समथिंग मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट मेथड पता चल गया कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है तो वो यहाँ पे दिया हुआ था, और हमको मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमको निकालना था, जो कि हमने इस तरह से m इज इक्वल टू m इंटू 12 करके निकाल दिया, ठीक है. Let us see the next question. So let us see some another questions. Okay, see this here. Second question.
Yes, two identical magnetic dipoles of magnetic moment 2 ampere meter square are placed at the separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other in air. What is the resultant magnetic field at the midpoint between the two dipoles? Okay, that means see here, two identical magnetic dipoles. मतलब ये suppose ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे. ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग डायपोल्स जो है तो वो हम रखने वाले हैं. ठीक है, द टू आइडेंटिकल magnetic dipoles of magnetic moment 2 are placed at the 2 meter with their axis perpendicular to each other. मतलब देखो यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है जिसका एक्सिस वर्टिकल है इस तरह से, राइट. ओके, तो और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर इतना डिस्टेंस इनके बीच में दिया हुआ है. ठीक है, 2 मीटर. ओके, सो अभी हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू डाइपोल्स. मतलब इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. तो अभी देखो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देंगे पी सपोज, तो ये पॉइंट पी जो है ना वो मैग्नेट ए के लिए एक्सिस पे है, बट मैग्नेट बी के लिए वही पॉइंट इक्वेटर पे है. तो एक्सिस की वजह से एक्सिस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेट का मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रहेगा जरूर. उसको हम बोल देंगे B1. ओके, B1. यस, and at the same time the magnetic induction due to this point magnet B here at the same point P will actually be in this direction here, so that will be denoted by B2 here. Okay, B2, and we'll have to find out the resultant of these two, which can be obtained by parallelogram law here. तो पैराग्राम लॉ यूज करके हमको इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमको ढूंढ के निकालना है, जिसको हम B बोल सकते हैं. Just don't confuse between this B and this B. Okay, that is the name of the magnet actually, and this is the magnetic induction here. So resultant magnetic induction or magnetic field here will be actually root of B1 square plus B2 square. Okay, because their angle between them is going to be 90 degree here. So therefore we can just use this formula. But B1 कितना है यहाँ पे, B1 जैसा कि हम जानते हैं कि ये मैग्नेट की वजह से किसी r डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है एक्सिस पे वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से. तो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब, राइट है. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे B1 के लिए, so that we can just be able to get this B1 to be simply equal to mu naught upon 4 pi into 2 times of m, where m is going to be 2 here, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है. और r कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से इस मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 1 मीटर रहने वाला है. तो इसलिए यहाँ पे हम 1 मीटर डाल देंगे. तो इस 1 का क्यूब भी करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा. तो इससे हमको ये मिलेगा सिंपली 4 times of mu naught upon 4 pi. ठीक है, just keep it as it is. Let us see. So 4 times of mu naught upon 4 pi. This will be the value of B1 here. Okay, if we just check B2 here, then B2 is the magnetic induction due to the another second magnet B at a point along the equator. तो इक्वेटर वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू simply m upon r cube, so that here mu naught upon 4 pi is just kept as it is, and m is going to be 2 once again upon r cube is r is again 1 because this is a midpoint, right? So midpoint is equidistant from both of the magnets here, and that's why this r is also going to be 1 here. तो उसका क्यूब करेंगे तो भी वो 1 ही बनने वाला है. तो इससे हमको मिलेगा 2 times of mu naught upon 4 pi kept as it is here. Okay, so if we just put all these values here in this equation, then b के अंदर यहाँ पे b1 का भी स्क्वायर और b2 का भी स्क्वायर हमको डालना है. तो इसमें लेकिन दोनों के अंदर mu naught upon 4 pi
ये जो कांस्टेंट है वो तो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैन बी टेकन कंप्लीटली कॉमन, एंड रूट ऑफ, यहाँ पे ये 4 सिर्फ बचा रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, इसलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, और यहाँ पे ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है इधर, तो इसलिए वो 2 यहाँ पे हम डाल देंगे, लेकिन स्क्वायर भी उसका करना है, ये भूलो मत। तो इसलिए फाइनली मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट विल एक्चुअली बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into, here it is, root of 4 square is going to be 16 plus 2 square is actually going to be 4. So 16 plus 4 becomes 20 here. And root of 20 can be written actually to be, yes, mu naught का value है ना हमारे पास, so we can just put it here and get it as mu naught का value होता है 4 pi into 10 raised to minus 7, and that is to be divided by 4 pi kept as it is, so that this 4 pi will just get cancelled, and root 20 can be written as, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 4 5 are, so 4 का रूट बनता है 2, so it will be 2 root 5 here, and then we can be able to write this as 2 root 5 into 10 raised to minus 7 as a final answer, which are in this option D here. Okay, so D will be the correct option this way. Yes, let us check the next one. हाँ, ये वाला देखेंगे एक बार ठीक से, 19th one. Read it carefully. Magnetic needle of a vibration magnetometer makes 12 oscillations per minute in the horizontal component of Earth's magnetic field. Okay. When an external short bar magnet is placed at the same distance along the axis of the needle in the same line, it makes 15 oscillations per minute. If the poles of bar magnet are interchanged, then the number of oscillations it makes per minute is, okay, very interesting question. See here, हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल है, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक निडल, ओके, जिसको हम रेड कलर से ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक निडल, यस, एंड it is making simply 12 oscillations per minute in the Earth's magnetic field. तो अब यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में. ठीक है, दिस इज द magnetic field produced due to the earth, okay, which will be suppose like this. ओके, तो इसके अंदर जब उसको वाइब्रेट कराया जाता है तो उसकी वजह से उसका जो ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने दिया हुआ है, 12 ऑसिलेशंस पर मिनट दिया हुआ है. सो इनिशियली अभी ये पर तुमको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक्चुअली इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, बराबर, ये फॉर्मूला है हमारे पास. ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, frequency will be actually 1 upon 2 pi into root mb upon I. Okay, तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है for the frequency of oscillation. Okay, so in the first case when the we can call it as 12 here, ये 12 जो है it will be the frequency of oscillation and it will be equal to 1 upon 2 pi root m into bh.
where BH is the horizontal component of Earth's magnetic field, and that is to be divided by I as it is. Okay, so this is equation number 1 here. Okay, but if you just see the second question, second statement, when the external short bar magnet is placed at the distance along the axis of the needle in the same line. Okay, तो मतलब हमने और एक मैग्नेट यहाँ पे रख दिया है. ओके, अगर ये मैग्नेट हमने इस तरह से रख दिया है यहाँ पे, suppose this is the magnet which is just kept here. So what will happen here is, because of this magnet, there will be another magnetic field which is just produced due to this magnet actually, which will be in the same direction as that of the existing Earth's magnetic field here. So, and as a result, the magnetic field will actually become more strong like this. तो अभी यहाँ पे ये जो पहले तो ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड था अर्थ का, लेकिन अभी ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इस मैग्नेट की वजह से. ये देखो इस तरह से. सो ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अभी ऐड हो जाएंगे. तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अगर हम सपोज बी बोल देंगे, ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ, सॉरी मैग्नेट. एंड सपोज द अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अगर हम सपोज बी एच बोल के रखा है ऑलरेडी, ठीक है. सो इन दिस केस व्हेन दिस मैग्नेट इज केप्ट हियर, so magnet is producing its own magnetic field, then in that case the magnetic field, total net magnetic field here will actually become B plus BH, करेक्ट है. तो B plus BH बन जाएगा. और इसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि and it is making 15 oscillations per minute now because of this magnetic field increased. तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला अगर हम फिर से यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितना बन गया अभी 15. ओके, तो 15 must actually be equal to 1/2 pi into root m into, अब यहाँ पे b के बदले क्या आने वाला है, b plus bh आने वाला है, ठीक है. and that is to be divided by I as it is, and this is actually given to be the equation number 2 here, right. and then we are to asked if the poles of bar magnet are interchanged. okay, तो मतलब अभी देखो यहाँ पे कि पोल मैग्नेट के जो पोल्स है, तो वो इंटरचेंज कर दिए. इस मैग्नेट को हमने मान लो उल्टा कर दिया ऐसे. जैसे हम उल्टा कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, बराबर. तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होने की वजह से एक्चुअली क्या होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अभी, तो वो एक्चुअली बी माइनस बी एच बनेगा, या बी एच माइनस बी बन जाएगा. समझ सकते हो ठीक से, BH minus B, इतना magnetic field बनेगा finally, and because of that the frequency will just get decreased, and the formula for that frequency can be obtained to be simply, तो यहाँ पे वो formula बनेगा हमारा F which we want here will be actually equal to 1/2 pi into root of m times of, अब यहाँ पे B के बदले क्या आएगा, BH minus B आएगा, तो ये BH minus B, and that is to be divided by I kept as it is, and this will be our equation number 3 here. इसमें हमको F निकालना है, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लेंगे. चलो ठीक है. सो इफ यू जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, then we can be able to get this 12/15 on this left side, and 1/2 pi, 1/2 pi cancel, mm cancel, I cancel, and in the square root what we are is simply BH upon B plus BH, or BH plus B we can say. Okay, this is the expression we have obtained here. Okay, so इससे हम BH और B के बीच में का रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं आराम से. Okay, so if we just reduce this here, then the next step we can just be able to get this as, or let us take this equation, transferred here. Okay, यहाँ पे उसको हम स्लाइड कर देंगे. Okay, so
अभी इन दोनों की इक्वेशंस को डिवाइड करने से हमको क्या मिल रहा है देखो, तो 12 और 15 का रिड्यूस करके हमको मिलेगा 4/5, राइट। 3 से रिड्यूस कर दिया उसको, और ये वैल्यू जो है वो बी एच अपॉन बी एच प्लस बी के बराबर रहने वाला है। ठीक है, अभी अगर स्क्वायरिंग करेंगे इसको तो हमको मिलेगा बी एच अपॉन बी प्लस बी एच is actually going to be 16/25, right? ओके, तो उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ठीक है, जस्ट कीप इट एज इट इज and just take the ratio of this equation 3 and 1 now. So if you just divide this equation 3 and 1, then what can we get is, okay, so equation 3 upon equation 1 gives f divided by 12, okay, which must be equal to, अब यहाँ पे इसमें भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिंपली रूट ऑफ बी एच माइनस बी अपॉन आई, ओके, sorry, b only, bh only. Yes, so if we just square on both sides, then we can be able to get this as, ठीक है, तो इसको अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको बी एच माइनस बी अपॉन बी एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बी एच माइनस बी अपॉन बी एच का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, एफ स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, जो कि 144 है। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंबाइन करना है। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे ना, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ, तो हमको मिलेगा बी प्लस बी एच अपॉन बी एच is going to be 25/16, right? And if you just take dividendo on both sides, तो dividendo मतलब क्या, numerator minus denominator upon denominator as it is, so that we can just get b plus bh minus bh upon bh. So bh get cancelled and we are left with b upon bh, which is simply equal to, यहाँ पे 25 minus 16 मतलब 9, okay, so it will be 9 upon 16 as it is, okay. And now if we just apply dividendo here also, or just take a take a reciprocal on both sides now, क्योंकि हमको इसको इसके से ऐसा बनाना है, तो उसके लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो यहाँ पे हमको मिलेगा बी एच अपॉन बी will actually be 16 upon 9, correct है? And now if we just take dividendo on both sides, then we can get this bh minus b upon b, no, we want bh in the denominator here. So okay, just before taking the reciprocal, let us apply dividendo first. Okay, तो डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा b माइनस बी एच अपॉन बी एच is actually going to be 9 minus 16 upon 16 as it is. So here it will be minus sign coming out, so that can be consumed by interchanging this b and bh here, okay. So you can just have this as bh minus b upon bh, which is actually going to 9 minus 16 क्या बनता है, 7 बनता है, 7, और माइनस साइन तो चला गया, तो इसलिए वो 7 upon 16 आ जाएगा. But now we can just recall that this bh minus b upon vh is nothing but f square by 144, right? So if we just put this value here, then we can be able to equate this f square by 144 with this 7 upon 16, right? So in the next step, then we can be able to calculate this. So first of all, just reduce this 16 and 144 here. तो ये 16 को अगर हम reduce करेंगे तो ये बनता है 9 here, because 16 9s are 144.
So we are left with that f square is actually going to be 7 into 9. So if we just try to find out f, then we can be able to get this root of this 9 into 7, which is actually root of 63, which has to be the correct option, which is there already in option B here. Okay, root of 63. This should be actually the correct option. Okay, so this is all about the questions or MCQs from this chapter, magnetism. Okay, so let us stop here and let us discuss, declare that this chapter has been finished at the MCQs level. In the next time, we'll just discuss some doubts. जो आज भी हमने एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ा था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Okay, so electromagnetic induction will be started next time. Just be prepared. Okay, so okay, thank you all of you.